Hello everyone, this is Samiksha Sethia. Welcome to the sixth session of our Let's Update Audit series. In this series, we are covering the differences, the new portions that Institute has come up in the new study material which is applicable for May 21 examination onwards for CA Inter Audit paper. If you are new to the channel and you haven't watched the previous videos, I'm giving the link of the playlist in the description box. आप जाके वहाँ पे जो बाकी के sessions मैंने पहले के chapters के upload किए वो जाके आप देख सकते हैं. If you want to download these notes wherein I have included all the differences, all the new things that Institute has added in the new study material, you can also click on the link in the description box and download the notes from there. Okay, so in this particular video we are going to discuss chapter number 6, that is audit in an automated environment. Already chapter number 1 to 5 I have discussed with you all. इस वीडियो के अंदर हम लोग chapter number 6 discuss करेंगे. Okay, so let's start with chapter number 6. In this chapter also Institute has not added any new concepts or examples, बस कुछ थोड़े बहुत questions हैं. So this video is going to be very short and you can see the notes are also of only 2 pages. तो सिर्फ जो questions हैं वही अपने cover कर रहे हैं. Let's start. पहला question देखो. A combination of processes, tools and techniques that are used to tap vast amounts of electronic data to obtain meaningful information is known as meaningful data. A combination of processes and techniques which is used to tap data and obtain meaningful information from that is a kind of analysis, and hence it is known as data analytics. So the statement is incorrect. Data analytics is the correct answer. Okay, next question देखो. During the assessment of internal controls, this question is a little tricky. I mean, if you haven't studied well from the study material, अगर आपने क्लास में मैंने जो बताया था उसको भी ध्यान से नहीं सुना तो यहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है. देखो, ड्यूरिंग द असेसमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, इफ द ऑडिटर कैन टेस्ट कंपेंसेटिंग कंट्रोल्स, ही शुड ऑब्टेन एविडेंस ऑफ अदर मिटिगेटिंग फैक्टर्स. If the auditor can test compensating controls for a particular assertion, for a particular what can go wrong, in that case तो आपको additional evidence obtain करना है. You don't have to check the mitigating factors in that case. What mitigating factors are there? If the auditor is unable to test any compensating controls, in that case mitigating factors come into picture. So here the auditor needs to obtain additional evidence. So you know these notes are very helpful in the sense that I have marked all the keywords here. Correct incorrect में जो भी reason है उसका keyword भी मैंने यहाँ पे highlight कर दिया है. तो ये notes आप ज़रूर से refer करिए. Next question, an automated environment basically refers to a business environment where the processes, operations, accounting, except the decisions are carried out by the use of computer systems. So we know that automated environment is an environment where all the operations, processes, including even decision making is carried through information systems. So this statement is incorrect. Even decisions are carried out by using computer systems, right? चलो next देखो. The company auditor need not report on the efficacy, that is efficiency, of internal financial controls in his audit report in case of a one-person company. Yes, this statement is correct. So यहाँ पे section कौन सा section का हम reference लेंगे? Section number 143. Section number 143 subsection 3 का clause I, which states the requirement of the auditor to report on the internal financial controls. वहाँ पे कुछ exceptions थी. If you remember, one person company, small company, छोटी वाली private company, remember 50-25 का criteria? Yes ma'am. So one person company and small company are exempted from the requirement of the auditor to report on the IFC. चलो next देखो. Generally applying inquiry in combination with re-performance as an audit testing method gives the most effective and efficient audit evidence. Although re-performance is the most effective method, सबसे अच्छा evidence आपको खुद से वापस प्रोसीजर परफॉर्म करके मिलेगा, बट देन दैट इज नॉट एफिशिएंट, इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग. सो एक्चुअली इंक्वायरी कंबाइंड विथ इंस्पेक्शन
मैंने बातचीत कर ली, आई एम इंक्वायरिंग, आई एम ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम थर्ड पर्सन, ऑल्सो आई एम इंस्पेक्टिंग, दैट इज एग्जामिनिंग अ फ्यू डॉक्यूमेंट्स, असेट्स एटसेट्रा. सो दैट विल गिव मी द मोस्ट effective and efficient audit evidence. So actually the answer is inquiry in combination with inspection. Clear? तो ये हो गए कुछ करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चंस जो एडिशनल थे. अभी हम लोग थियोरेटिकल क्वेश्चंस में आ जाते हैं. सिंपल क्वेश्चंस हैं, फटाफट अपने डिस्कस करेंगे. ऑलरेडी यू नो द आंसर्स, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड, दिस चैप्टर इज वेरी इजी, स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो सिंपल क्वेश्चंस है, डिटेल में आई विल नॉट बी डिस्कसिंग, बस क्वेश्चंस मैं आपको बता देती हूँ. लिस्ट एनी 5 पॉइंट्स दैट एन ऑडिटर शुड कंसिडर टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपनी का ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट. So here what type of information we need to obtain? Information regarding the types of information system use. IS system कौन सा use होता है, the location of the IS system, key personnel who are responsible, architecture कौन सा use हो रहा है, उसके बाद में version कौन सा है, interface between different applications. So all these need to be understood. By these points the auditor will be able to obtain the understanding of the entity का automated environment. ठीक है. नेक्स्ट देखो, द ऑडिटर शुड अंडरस्टैंड एंड कंसिडर द रिस्क्स दैट में अराइज फ्रॉम द यूज ऑफ आईटी सिस्टम्स. सो ये तो एकदम फेमस क्वेश्चन है इस चैप्टर का, रिस्क्स रिलेटेड टू आईटी. इनएक्यूरेट डेटा प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग ऑफ इनएक्यूरेट डेटा, ठीक है. उसके बाद में प्रिविलेज्ड एक्सेस और एक्सेसिव एक्सेस, अनऑथराइज्ड एक्सेस, देन डायरेक्ट डेटा चेंजेस इन द बैकएंड सिस्टम, लैक ऑफ चेंजेस और फेलियर टू मेक द नेसेसरी चेंजेस, then inaccurate processing, already I have told. So all these are risks which are related to using information systems. Clear? चलो next देखो, with respect to audit in an automated environment explain the following. So you have to define CATS. CATS का full form क्या है? CATS mean computer assisted audit techniques. डेटा एनालिटिक्स को आपको डिफाइन करना है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस. डेटाबेस इज द प्लेस वी कैन से और द सिस्टम वेयर इन द डेटा इज स्टोर्ड एंड प्रोटेक्टेड. ठीक है. इंफॉर्मेशन सिस्टम्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क्स एंड प्रोसेसेस, राइट, विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. प्रिविलेज्ड एक्सेस मतलब हो गया यहाँ पे सुपर यूजर एक्सेस विथ नो और वेरी लिमिटेड रेस्ट्रिक्शंस. ठीक है. यहाँ पे यूजर को जो सिस्टम का एक्सेस दिया जाता है उधर में बहुत कम रेस्ट्रिक्शन है या फिर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं, अनलिमिटेड एक्सेस टू द सिस्टम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव एंड एनलिस्ट द एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन जनरल IT कंट्रोल्स ओवर प्रोग्राम चेंज. सो यू नो दिस क्वेश्चन इज वेरी इन डेप्थ ऑफ योर टॉपिक. स्टूडेंट्स जनरल IT कंट्रोल्स पढ़ लेते हैं, उसके टाइप्स भी पढ़ लेते हैं, बट प्रोग्राम चेंज का ऑब्जेक्टिव आपको बताना है और उसकी एक्टिविटीज बतानी है. तो प्रोग्राम चेंज का ऑब्जेक्टिव क्या है? दैट व्हाटएवर चेंज इज मेड टू द प्रोग्राम्स, द मॉडिफाइड प्रोग्राम्स स्टिल कंटिन्यू टू मीट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. दे स्टिल कंटिन्यू टू मीट द ऑब्जेक्टिव्स. एंड व्हाट आर द एक्टिविटीज दैट आर टू बी इंक्लूडेड इन दिस कंट्रोल? कि कभी भी कोई चेंज होगा तो उसका एक चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस होगा. A request for change has to be made. Proper recording of the changes need to be done. फिर changes किस तरह से execute होंगे? The execution of changes, testing of those changes, analyzing those changes, then implementation of the changes. Documentation should be done properly. So all these are activities which are included in program change. Next देखो, the directors and management have primary responsibility of implementing and maintaining an effective internal controls framework, and auditors are expected to evaluate, validate and report on the design and operating effectiveness of the internal financial controls. Explain the framework which helps the auditor in fulfilling this responsibility. So IFC का जो गाइडेंस नोट है वो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है हाउ द ऑडिटर नीड्स टू इवैल्यूएट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ IFC, जिसके अंदर रिस्क असेसमेंट इज इंक्लूडेड. देन द ऑडिटर नीड्स टू अंडरस्टैंड एंड इवैल्यूएट the risks and the related controls, the entire general IT controls हो गए, आपके automated controls हो गए, सब चीज़ की अंडरस्टैंडिंग ऑडिटर को ऑब्टेन करके उसको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा.
After that, the auditor will evaluate the operating effectiveness of the controls. Thereafter, reporting is to be done. Reporting regarding any significant deficiency is to be done to the TCWG and proper documentation also needs to be done. इसके लिए internal controls, memos वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है. तो ये सारा आपका हो गया किस तरह से IFC पे auditor को reporting करनी है. How does the auditor evaluate the effectiveness of IFC, right? Last question देखो, explain the following terms in context of the audit of an automated environment. You have to again define information system, material weakness. Material weakness क्या होती है? It is any deficiency or combination of deficiencies, more than one deficiency, which is significant to merit the attention of TCWG. It is so important that TCWG का ध्यान देना उस पर जरूरी है. Management will not be able to prevent that deficiency. So the TCWG needs to take the charge. Material weakness and significant deficiency both are the same. Both are same. Privileged access we have already discussed. Segregation of duties. It is a type of control wherein the staff duties are arranged in such a way so that no one employee has exclusive right over an entire transaction. The work of one employee is checked by the other. इसको हम कहते हैं segregation of duties. ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो पूरा ये चैप्टर नंबर 6 के जो भी एडिशंस थे वो हमने डिस्कस कर लिए. ओके, इफ यू हैव एनी डाउट्स रिलेटिंग टू दिस then you can write down in the comment section. I'll get back to you. And if you think that this video is helpful to you and may be helpful to your friends, do like this video and share करिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा. मैं अपने चैनल पे काफ़ी सारे ऑडिट की जो अपडेट्स हैं, जैसे कि ये अपडेट बहुत बड़ी है कि जो भी चेंजेस हुए स्टडी मटेरियल में, स्टूडेंट्स को पूरी बुक फिर ना पढ़नी पड़े, इसलिए मैंने सारे चेंजेस को अलग से आपके लिए लिस्ट करके उसकी डिस्कशन कर दी है. So keep watching. The other chapters will be uploaded soon and notes के लिए मैंने आपको बता दिया, you need to click on the link in the description box और आप डाउनलोड कर सकते हैं. Happy learning everyone. God bless you all. Thank you so much.